if you get a time or tomorrow, then you can give the exam, and then whatever questions we can then come back and discuss. शुरू करते हैं फार टू में. न्यू पॉइंट, रेशियो एनालिसिस, quite interesting topic. So it should be good to go, not very difficult. For exam point of view, generally speaking, CP exam gives you the formulas, so you don't need to remember all the formula in ideal world. So generally these are tested in the simulation, and as I said, in simulations you will be given the formulas already, that how you need to calculate the ratio. If it's an MCQ, they will not give you the formula, so in that situation only the formulas can be important to get remembered. So what I'll suggest, when we do this chapter, majority of the formula you should be able to remember with concepts only. But on a safer side, you should know them, and we should not rely completely on simulations that they are going to give us the formula. So शुरू करते हैं एक एक करके. Quite easy chapter, maybe today's session or maybe a little bit of tomorrow we should be able to do the ratio analysis. I have another example for practice as well, followed by a flexible budgets. Another very interesting topic. When we learn the understanding conceptually, we'll draw one model, one simple formula to calculate the flexible budget. So overall, a very interesting chapter, slightly lengthy mathematical point of view, but I think it is not a theory, so you will not get bored, and the things will be better. So शुरू करते हैं. रेशियो एंड एनालिसिस क्या होता है? So it basically analyze the financial statement information for the users of the financial statement. Now, ratio can be used for the various purposes. It may be used for income statement purpose, like how the company is operating. It may be used for the net profit purpose. So after the operations, after the overheads deduction, how the company is performing. A ratio can be used for solvency, to check whether company has enough cash available. A ratio may be used to check the debt related aspects, so how bad company is into the debts, or it may be used to check how efficiently company is using their assets. So all the kind of ratio we are going to see. This is a standard example which we are going to cover. It's the same. So let me open the backer also along. So ratio analysis, it's the same example we are going to use. I'm not going to read through this. It's just a formula. They are saying that if numerator is higher, you get a positive number. Denominator higher, you get the negative number. So that's a simple mathematics. I'm not going into a detail of this particular thing. So this is the same example I have put on the slide. So there is a G company. They have a balance sheet. And let's start with a profitability ratio. So these are the ratio. They are representing your income statements. So what are the various profitability ratios we can calculate? Number one, gross profit margin. So what is the formula for gross profit margin? So gross profit is nothing but gross profit divided by sales. Now what this represent is how good the company's product is. It may be possible that your product is very good, but you are still at a loss. That's not a problem. You just need to fix overheads for your company. For example, your gross profit is 90%, but your net profit is only 1%. It means 89% is your overheads. You need to control that cost. But gross profit is good. That's a big positive number. However, if gross profit itself is a negative, now that represents the company's product is not getting accepted in the market. Pricing is too high or costing is too high, and it represents a risk for a company to survive. So what is the formula for gross profit? Gross profit is nothing but sales minus cost of sales. So gross profit divided by sales gives you the gross profit margin. Let's check an example. What is the gross profit they have given? So this is the income statement year 1, year 2. Now income statement ratios are always calculated for the year. So let's talk about year 2. Gross profit is 800K. Sales is 1.8 million. So your ratio should be 800K divided by 1.8 million. So that comes to 44.4%. Clear with the gross profit margin? Yes. Second one, net profit margin.
So net profit margin represents how company has performed net after paying all the expenses, all the taxes, all the stuff. What is the net income generated by the company after taxes divided by sales? If you remember this format, we see in FAR 1, sales minus cost gives you gross, minus operating, minus interest income gives you income before taxes, minus income taxes gives you a net income. Maybe you can have one more line plus discontinuing operation after taxes, and then finally you have a net income. Below the net income, you have a EPS. What is EPS? Net income divided by number of outstanding share. So what is the net profit ratio? So net profit divided by sales, it comes to $200,000 divided by 1.8 million. So 200,000 divided by 1.8 million, that comes to 11.11%. Again, this is a important bottom line for the company, but this is not only a parameter which company should see. So for example, as I said, your gross margin, let's say in this case is 44%, but net margin is only 11%, which suggests that a company has 33.33% of overheads in between. Now, if they want to increase the profitability, they don't have to focus on gross profit, that is sales or a cost of sales. They have to just focus on the overheads aspect. Clear with the net profit margin? Yes. So the third one is return on sales. Now, you can have two formulas here, and when we see ratio analysis, there are multiple formulas available in the market. Even within the CPA exams, even if you see other courses like CA, CFA, you can have a multiple formula. Like now, as name suggests, return on sales, you can have a two meanings of this: return of operating profit on sales or return of net profit on sales. And as I said, in CPA simulations, you will be given the instructions that what sort of formula you are supposed to use. So there are two possible formulas for return on sales. Number one, net profit divided by sales, or number two, operating profit divided by sales. We are going to consider operating profit because net profit divided by sales is already taken as a separate ratio, which is your net profit margin. So return on sales for our backer purpose and for our CPA purpose, we are going to say it's EBIT divided by sales. What is EBIT? It's a common term you will see a lot of time in accounts, in finance, even in the corporate industry when you will go. EBIT is nothing but your operating margins. So this is the income which company is generating from the operations of the business. So again, if you remember the FAR 1, when we see a presentation, we saw a revenue from operations minus cost of sales minus other operating businesses which are necessary to run the business gives you the operating profit. Below the operating profit, you have an interest expense, gives you a income from the operation after deducting the interest expense. So EBIT is nothing but an operating profit or earning before interest and taxes. That's the full form. EBIT, earning before interest and taxes, divided by sales. So let's just go and see what we have: earnings before interest. So these are your gross profit of 800K minus operating expenses 486K. So 800K minus 486K gives you an operating income. So whatever mathematics come, roughly 314K. So 30313030, it's your operating margin, divided by sales of 1.8 million gives you 17.39%. So what is the interpretation? The company is able to earn 17% from its operations, and company is ready to pay interest and taxes out of this 17% income which they have earned. Clear with the third one? This will include the other revenues and gains and other No, costs, I revenue guess. from operations. No, other revenues and gains are not included. This is purely revenue from operations only. So it's sales minus cost of sales minus operating expenses only. No other income, no other expenses. Okay. Actually, fourth one, return on assets. What is the formula for return on assets? Net income divided by average assets. Now, before I go in this formula, when we did a basic concepts, couple of demo sessions,
You remember we did couple of ratios, operating cycles, turnover ratio, all those things. In that time, I told you one thing, that whenever you have income statement ratio, you use the data only for that year. But when you have one item of income statement and one item of balance sheet, then balance sheet you always use the average numbers. If you remember, We didn't discuss this. right? So in this particular situation, you have again a ratio which is income statement plus balance sheet both. So what is the first of all formula of return on assets? Asset represents your balance sheet. Return is either operating profit or a net profit item of income statement. So the formula is net profit divided by assets. But what assets? Average assets, not the assets for the year. So let's see what we have a net income. Net income is $200,000. What is our assets? So our assets are 2.8 million plus 2.7 million, and you do the average 2.8 plus 2.7, that comes to 2.782 million. Then this comes to 7.2 million. So again, when you have a balance sheet plus income statement, balance sheet always go with the average numbers. Now there is one more change in your backer material which generally we do not align, but I'll come to there when we go. वहां पर थोड़ा formula mismatch है compared to what other CPA materials are giving and what industry is doing. So I'll give you again two formulas जो backer में है plus जो industry करती है, एंड देन इट डिपेंड्स कि आपको सिमुलेशन में एग्जाम में कौन सा यूज करने के लिए बोला जाता है एंड यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली. But coming on this formula again, return on asset, it's 7.2%. So it represents that every asset company has around 7.2% net income is generated by that particular asset. So suppose you have a building of 1 million. So 1 million into 7.2%, let's say 7.2k. So that is the net income out of 200k is generated by the building, that particular asset. फर्स्ट फोर फॉर्मूला कोई भी डाउट? How many years of average will we take for total assets? 2 years. Opening balance sheet plus closing balance sheet. So like in this example, you have an opening balance sheet. If you go on top, that's year one balance sheet, year two balance sheet. What we did, 2.7 million plus 2.8 million divided by 2. Okay. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी. अगेन रिटर्न इज समथिंग योर नेट इनकम, equity is something your balance sheet item, so we are going to use average equity. Formula is net income divided by average equity. Now if you see, you can build this formula on your own. Return, it's net income, asset is average assets. Return net income, equity is your average equity. So what is the net income? Net income is 200k. What is your average equity? The total equity is 1.4 million as a closing, 1.3 million as a opening. So 1.4 million plus 1.3 million divided by 2 is your average equity. So that comes to 1.41 million. The percentage are 14.18. What is the interpretation? For every $1 of equity, 14.18% net income is contributed by that particular equity. Suppose you have a 100k of equity, $14,180 are generated as a net income by investment of that 100,000 of equity. Last one, operating cash flow ratio. Now here we saw an operating profit ratio. Now this is talking about operating cash flow ratio. That means how much cash you have available because of the operations of your business, which you can use to run the show in future. So it says that cash flow from operating activities divided by your current liabilities. When we do a cash flow statement, this will be more clear to you. Your cash flow statement is divided into a three parts: operating activity, financing activity, and investing activity. So this is talking about how much cash business operations has generated, which can cover up your business liabilities, not long-term liabilities, but your short-term liabilities. So operating cash flow ratio is nothing but your cash from operation divided by current liabilities. Let's say in your question, what is your current liabilities they have given? So they have given current liabilities of 695k. So they have used 695k, and cash flow from operations they have given 275k.
So 275K we are going to use as a cash flow from operation, which comes to 0.396. So what we are saying in this ratio, every $1 of debt your company has, your company is only have $0.396 available to repay that debt from the operation. This ratio is very bad ratio. So tomorrow, if all your creditors and all your lenders comes at your door and ask the money, you will only have 0.4% of money available in your pocket to pay out your current debts. All clear with all the formulas which are on the screen? Yes. चलिए ठीक है. So I'll ask you to go through now section number 2 in your book, profitability formula. There are some interpretations written below that side. So एक बार सारे formulas देख लो section number 2 में. I'll be back in 5 minutes और फिर हम दूसरे रेशियो में शुरू करते हैं. What is DuPont return on assets? DO point will do in next slide. So that represents actually how well company has done net income and how well company's asset has generated revenue. It's a combination of this. So we are doing in next slide. Okay. I'm done with the book. Okay, चलिए आगे शुरू करते हैं. Let me share it again. So let's go through the next slide now. DO point return on asset. Now this is a ratio which mixes your net profit and asset turnover ratio. So both represents how well company's profitability is working. Net profit margin ratio represents for every dollar of the sales, what is the net profit company is generating. So this is a positive ratio, higher is better. So you always want a higher net profit for every dollar of sales they generate. Asset turnover ratio represents how effectively assets are used for the company. So for every dollar of the asset, how much sales is generated by the company. Now in the company, your net profit can be increased because of the two things, or because of the in fact three things. Number one,
Your sales goes up, net profit can go up. Your expense go down, your net profit can go up. Or you effectively start using your assets, then your net profit will go up. So this formula represents if the company has a certain percentage of net profit, what is the contribution of the sales and the cost, and what is the contribution of the effective asset utilization. So the formula for DO point return on asset, it's net profit divided by sales, which is a profit margin ratio, multiplied by asset turnover ratio. So we are splitting this ratio and saying that certain percentage are contributed because of increase in sales or decrease in cost, and certain percentages are increased because company has effectively used the asset. Both the parameters company wants to go up, so your overall net income goes up. So the formula says, let's go back to the book for DO point asset. It says that profit margin into asset turnover. If you break this further, what is the profit margin ratio? Net profit divided by sales into asset turnover. So it's a sales, asset is a balance sheet item. So you again take average total asset. Now net income we calculated in the last slide. It's 11.11 into asset turnover. What is your net sales? So I think asset turnover did we calculate in last slide? No. So let's just quickly see what is the asset turnover ratio. Your net sales, it's 1.8 million divided by your average assets. Average assets of the company are 2.8 million plus 2.7 million divided by 2. Roughly 2.8 million only it will come. So that is your asset turnover ratio. So net income into asset turnover ratio of 0.65 gives you 7.22%. So what we are saying, company is in positive of 7.22%. Why? Because net profit is increasing by 11% for every sales they generate, and the assets are 0.65 times used better. Now, if you see what is the action required for board of directors here. So net income is in positive. It is low, still it's positive, but this is the problem. If you see every $1 of asset, company is generating only 0.65 times the profit. If company can use the asset more better, let's say if the use of the asset is a one time for every sales generated, your DO point profitability will increase to 11%. So currently the action for the management is to keep on utilizing the asset in a better way so that your net income is multiplied more effectively. ठीक है, एक बार क्विकली देख लो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड द एग्जांपल, उसके बाद नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अभी. So now this all are the income statement related ratios जहां पर कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर हो रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर हो रही थी. Now let's go to a next ratio, which is the liquidity ratio. That means how much money company has available to pay their obligations. So if your creditors comes tomorrow, आपके पास कितना पैसा है to meet the short-term obligations. So this is called a liquidity ratio. Now there are certain ratios here which are used in the market. So हम लोग भी same ratios को cover कर रहे हैं. Number one, current ratio. So current ratio is nothing but your current assets divided by your current liabilities. Now, if you see in this particular ratio, you have both the sides balance sheet, denominator and numerator. So you are not going to use average number. You are going to use the current year numbers only. Question में एक बार वापस. The total current assets are $7,15,000 and your current liabilities are $6,95,000. So current asset divided by current liabilities, 715 by 695 gives you 1.03. This indicates a pretty fine ratio, not the best, but pretty good. So what you are saying, if tomorrow the 6,95,000 creditors comes at your door, you have 715K in your pocket to pay the obligation. So any ratio more than 1, it's good. A better ratio is 2 is to 1, 1.5 is to 1, 1.8 is to 1, which gives you a more freedom to negotiate to your debt holders. But anything above 1, it's still okay. If it's less than 1, it's a risk. It says that company may not have a good money in your hand to pay your debt, and you may have to think about the alternative options to pay out your debts. The second ratio is a quick ratio.
Now this is a more aggressive ratio. Another name for this ratio is a liquid asset test ratio or a quick ratio. नाउ ये क्या बोलता है कि करंट असेट्स के लिए तो आपके पास 90 डेज का टाइम है. जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट करंट असेट्स, करंट रेशियो, दिस आर द 90 डेज रेशियो. क्विक रेशियो इज नेक्स्ट 1 आवर, नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई आपके घर पे आ गया टू पे योर डेट, हाउ मच मनी यू इंस्टेंटली कैन हैव. सो दैट इज अ क्विक रेशियो. सो क्विक रेशियो के दो फॉर्मूलाज है. नंबर वन, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटीज. सेकंड इसका फॉर्मूला ये बनता है, इट्स सेम रिजल्ट बट देखने का तरीका अलग है. इट्स टोटल करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री. So if you see your current asset is consisting of generally cash, marketable security and AR only, but plus inventory, then you get a total current asset. So the second formula is total current assets minus inventory divided by your current liabilities. Either of the formula you can use. So let's see हमारे question में क्या दिया है. So you have a cash 50 plus 75 of marketable securities. We assume it's a marketable security. You can also assume it is not. Plus accounts receivable. So 375 plus 50, 425 is your liquid assets divided by your liabilities, 6,95,000. It's 0.61. It's good. It's not too bad, but you can improve. 0.75 to 1 is the ideal quick ratio you should have. Slightly, you are slightly under par, so you have to work to get your liquid assets slightly better or reduce your liability, but it is still not bad. If this would have been 0.1 or let's say -1, then it's a big threat for the company, that for their immediate outflows they don't have a money available tomorrow. Market security is a current asset. Marketable security is a current asset. Yes, it's just like open your mobile app, sell the security, in next 24 hours you have the money back. Clear with both the ratio? So here they are using trading securities. Yes, so you can assume now again जब हम लोग देखेंगे various type of security, trading security is generally a short term, and if you have a slightly long term like 90 days to 360 days, it's called available for sale security. And if you have more than 360 days, then it will be your investments at fair value. These are your non-current investments. So this is a current investment trading security, always short term. अगर ये होती अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, माइट भी हमने इसको इग्नोर किया होता बिकॉज इट्स स्लाइटली लॉन्ग टर्म इन नेचर बट लेस देन 1 ईयर. चलिए नाउ नेक्स्ट टू रेशियोज हमने पहले किए हुए हैं. यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है आपकी बुक में, विच अगेन आई डू नॉट अग्री, बट हम लोग दोनों चीज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AR टर्नओवर रेशियो. सो यहाँ पर अगेन दो चीजें हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल. व्हाई हम एवरेज लेंगे? बिकॉज सेल्स इज योर इनकम स्टेटमेंट आइटम. AR टर्नओवर रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपने साल में कितनी बार सेल्स किया. सो यू हैव अ इन्वेंट्री, you have a finished goods coming to your warehouse as an inventory, and then inventory go out in the market. Your inventory go out to the market. आपने साल में ये एक्टिविटी कितनी बार की, उसको बोला जाता है AR टर्नओवर रेशियो. तो फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय योर एवरेज AR. सो सेल्स क्या दिया है कंपनी का? सो लेट्स सी, सेल्स इट्स 1.8 million. व्हाट इज योर एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल? 300K plus 390K divided by 2, which comes to 345K. So we are saying 5.22 times. तो आपने साल में 5.22 टाइम्स सेल्स किया, पैसा लेकर आए. इन्वेंट्री आया, फिनिश गुड्स में सेल्स किया, पैसा लेकर आए. इन्वेंट्री आया, फिनिश गुड्स में सेल्स किया, पैसा लेकर आए. 5.22 times that activity has taken place in the year. Higher the better. अगेन आप जितना ज्यादा सेल्स कर पाओगे, that your ratio of, for example अगर आपका यही सेल्स 5.8 million होता with this AR, then your टर्नओवर रेशियो वुड हैव बीन हायर. तो आप जितनी बार ज्यादा सेल्स कर पाओगे और या जितना फास्ट पैसा ले पाओगे, ये रेशियो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो मैथमेटिकली? या तो आप सेल्स को बढ़ाओ या एवरेज AR को कम करो. सो या तो आप सेल्स बढ़ाओ मार्केट में जाके, या पैसा फटाफट कलेक्ट करो, योर AR विल गो डाउन. सो आइदर ऑफ द टू वे दिस रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड. नाउ मैनेजमेंट आस्क यू कि ठीक है हमने पांच बार एक्टिविटी की साल में, बट व्हाट इज द एवरेज डेज जब हमारा पैसा फंसा रहा?
व्हाट डू यू मीन बाय पैसा फंसा रहा? आपने सेल्स किया लेकिन कस्टमर ने पैसा देने में टाइम लगाया, तो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल ऑन एन एवरेज कितने दिन तक आउटस्टैंडिंग रहा? इन मार्केट, इन कॉर्पोरेट लाइफ आप जब जाओगे, इसको बोलते हैं डीएसओ एनालिसिस इन अ वेरी लेमन टर्म। डीएसओ मतलब आपने जब सेल्स किया तो कितने दिन तक कस्टमर ने आपको पैसा नहीं दिया। Now this days you want to reduce, you want a faster collection from your customer. So currently आपकी बुक में यहाँ पर फॉर्मूला है एंडिंग एयर डिवाइडेड बाय दिस एयर टर्नओवर रेशियो। वी विल इग्नोर दिस रेशियो। हम लोग ये रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो you already have the AR turnover ratio calculated. You just have to do 365 divided by AR turnover ratio. It should be 69.92 days ideally. अगर हम एवरेज AR यूज करते हैं तो ये एक छोटा सा चेंज है आपके बैकर मटेरियल में। सिर्फ डेज कैलकुलेट करने के लिए दे आर नॉट यूजिंग एवरेज, दे आर यूजिंग अ क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, विच वी जनरली डू नॉट अग्री। बिकॉज आप जब सेल्स करते हो और पैसा कलेक्ट करते हो, इट रिप्रेजेंट्स योर लास्ट ईयर अकाउंट्स रिसीवेबल एज वेल। आप सिर्फ करंट ईयर का पैसा कलेक्ट नहीं करते हो। इवन करंट ये ईयर का जो, समझ में आया, क्या क्या चेंज है? देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एआर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स सेल्स, सॉरी, it's sales divided by average AR. So this is okay with your backer material and okay with your industry. फिर days का फॉर्मूला क्या होता है? We generally say it's 365 divided by AR turnover ratio, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। अब इस फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा बहुत डीप डाइव करें, सो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? 365 डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज AR। मैंने जस्ट यहाँ पर एयर टर्नओवर रेशियो जो है इसको रिप्लेस किया मेरे ऊपर के फॉर्मूला से। सो दिस इज माय न्यू फॉर्मूला फॉर डेज कैलकुलेशन। दिस इज माय फॉर्मूला फॉर माय डेज कैलकुलेशन। मैंने एयर टर्नओवर रेशियो को चेंज किया एंड आई जस्ट पुट दिस इक्वेशन इनटू पिक्चर। सो व्हाट आई से 365 डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एयर। यहाँ तक अलाइंड हो आप? सर, आपकी बुक ने क्या किया है? 365 डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय एंडिंग एआर दिया हुआ है। सो बैकर इज यूजिंग एंडिंग एआर। लॉजिकली भी ये गलत है, बाकी सारे सीपीए मटेरियल्स में भी ये नहीं दिया जाता है, दे यूज एवरेज एआर ओनली। सो लेट्स सी योर बुक में देखते हैं। सो टर्नओवर रेशियो जब वो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, सो दे आर यूजिंग द सेम थिंग, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एआर। इट इज मैचिंग फॉर आवर सोल्यूशन 5.22 टाइम्स। बट जब आप डेज गिनते हो, यू स्ट्रेट अवे डू 365 डिवाइडेड बाय 5.22 और आप एवरेज एआर को कंसीडर करते हो। बट बैकर ने क्या किया है डेज गिनने के लिए? दे हैव डन एंडिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, नॉट एवरेज। नाउ दिस इज अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल प्रैक्टिस। So what they have done in this formula, they have recalculated accounts receivable turnover ratio. So let us recalculate again. So हमारा sales कितना है? So we are given a sales of 1.8 million, and instead of average AR, they have used ending AR. Ending AR is 300K. So now your new ratio is 6. So what is your new formula as per Becker? 365 days divided by 6, which is 60.83 days. Ideally क्या होना चाहिए था? 365 divided by 5.22. 5.22 comes with average AR equation. 60 days comes to ending AR equation. तो ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल चेंज है आपके बुक में। जब भी इन्होंने डेज कैलकुलेट किए हैं, चाहे इन्वेंट्री के डेज हो, अकाउंट्स पेबल के डेज हो या अकाउंट्स रिसीवेबल के डेज हो, फॉर डेज पर्पस दे हैव यूज्ड एन एंडिंग बैलेंस, जो कि इंडस्ट्री से डिविएट करता है। वी डोंट यूज दिस। इवन आप वायली की मटेरियल देखोगे या मैग्रो हिल्स देखोगे, दे आल्सो यूज एवरेज ओनली। अगेन सीपी एग्जाम्स में आपको दे दिए होंगे फॉर्मूला, सो यू डोंट नीड टू वरी, बट जस्ट रिमेंबर बोथ द कॉन्सेप्ट्स। आपको कुछ भी आ सकता है, बिकॉज अगर बैकर ने एंडिंग लिया है, इट मींस दे वुड हैव सम इनसाइट्स की एंडिंग नंबर भी एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है। सो यू शुड रिमेंबर बोथ द थिंग्स। सबसे पहले जब टर्नओवर कैलकुलेट करना है, एवरेज, ऑलवेज एवरेज यूज करो। डेज कैलकुलेट करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप दो एवरेज को। लेकिन अगर आपका एमसीक्यू में कोई डेज मैच नहीं हो रहे हैं
यहाँ सिमुलेशन में क्लियरली बोला गया है कि एंडिंग एआर यूज करो एंड जस्ट रिप्लेस एवरेज एआर विथ एंडिंग एआर एंड रिकैलकुलेट द डेज अगेन। ठीक है, क्लियर है अकाउंट्स रिसीवेबल एंड डेज इन अकाउंट्स रिसीवेबल रेशियो। Uh, we you mentioned we do 365 divide by accounts receivable ratio. यस, There, why are we first doing a accounts receivable ratio then dividing it by 365? देखो ये उन्होंने सेम फॉर्मूला ये वाला लिखा है। सो डेज का फॉर्मूला क्या है, 365 डिवाइडेड बाय अकाउंट्स टर्नओवर रेशियो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब अकाउंट्स टर्नओवर रेशियो को आप चेंज करो, इसकी जगह आप कैन आई राइट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ईयर। Yes. अब 365 डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ईयर, बेसिक मैथमेटिक्स, दो बार अगर कोई चीज डिवीजन में गई तो वो ऑटोमेटिक न्यूमरेटर में आ जाती है। तो इसका इफेक्टिव फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 365 इंटू एवरेज ईयर डिवाइडेड बाय योर सेल्स। ठीक है, क्योंकि एवरेज ईयर इज सेकंड डिनोमिनेटर, तो बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर में चला जाता है। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला दे हैव रिटन। सेल्स और 365 को उन्होंने एक साथ किया है एंड एवरेज ईयर से डिवीजन किया है। बट अगेन एज आई सेड, यू डोंट नीड, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला। अब जितनी ज्यादा चीजें याद रखोगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आपको सिंपल फॉर्मूला क्या रखना है, लेट्स फॉरगेट बुक ने क्या दिया है, लेट मी जस्ट डिलीट दिस। आपका सिंपल फॉर्मूला है, पहले टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो। सो इन आवर एग्जांपल इट्स 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 345 के। इफ वी यूज एवरेज, अगर आपको एंडिंग यूज करना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस विल बिकम 300 के इफ वी यूज एंडिंग। सो ये नंबर क्या बनता है, 1.8 डिवाइडेड बाय 3.45 डिवाइडेड बाय दिस। अब डेज आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको एवरेज एआर यूज करना है तो 365 डिवाइडेड बाय 5 यूज कर लो। अगर आपको एंडिंग यूज करना है तो 365 डिवाइडेड बाय 6 यूज कर लो। सो यू कैन जस्ट ट्विक योर फर्स्ट फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द केस सिमुलेशन इज गिविंग टू यू। सिमुलेशन अगर आपको बोलता है एवरेज यूज करो तो यू गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। सिमुलेशन अगर आपको बोलता है एंडिंग यूज करो, गो फॉर द सेकंड इक्वेशन। इसके बाद डेज निकालना है, जस्ट डिवाइड वॉट एवर यू गेट बाई 365। तो यहाँ पर आपको आंसर मिला 5.22, जस्ट डू 365 बाई 5.22, 365 डिवाइडेड बाई 6। एंड यही अप्रोच आप रखो कोई भी टर्नओवर फॉर्मूला में, वेदर इट्स एआर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो। यही एक अप्रोच रखो, इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दी क्वेश्चंस, आपका कंफ्यूजन कम होगा। डजंट मैटर इन्होंने हमको क्या फॉर्मूला लिख के दिया है। इज अवर आंसर इज मैचिंग, यस द आंसर इज मैचिंग, सो वी आर गुड टू गो। ठीक है, How is the answer matching? यस देखो अगर फर्स्ट है 5.22, सो वी हैव 5.22, लेकिन डेज गिनने के लिए दे आर यूजिंग एंडिंग। सो एंडिंग में 6 बनता है, सो 365 डिवाइडेड बाय 6 कम्स टू 60.83। सो हियर इट कम्स टू 60.83 डेज। But if we are using average, then shouldn't our answer be different? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, आपकी बुक ने एवरेज यूज नहीं किया है, सो दिस इज अ डिविएशन फ्रॉम द इंडस्ट्री। अगर वो यहाँ पर एवरेज एआर यूज कर दे तो आपका आंसर बनता 69 डेज, जो कि मोर एक्यूरेट है कंपेयर टू व्हाट योर बैकर हैज गिवन एज अ 60 डेज। Okay. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रिथम में है। सो लेट्स कवर अप टू मोर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले टर्नओवर पे आते हैं। डेज के लिए हम फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम सीधा 365 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी डेज के लिए उन्होंने एवरेज इन्वेंट्री यूज नहीं की है, दे हैव यूज्ड एंडिंग इन्वेंट्री। सो लेट्स बिल्ड आवर फॉर्मूला आल्सो। सो लेट्स पुट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपका फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री के लिए लाइन क्या होती है इनकम स्टेटमेंट में, इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो लेट्स सी आपको P&L में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिगार्डिंग। So this is your income statement. You have a cost of sales given for 1 million. So let's just put 1 million as a cost of sales, and I'm again doing both the options. Option 1 अगर हम average लेते हैं, option 2 अगर हम ending लेते हैं. What is your average inventory? Your inventory is 290 plus 275. So it's 2,90,000 plus 2,75,000 divided by
टू। अगर आप एंडिंग इन्वेंटरी सिर्फ लेते हो सो इट्स 2,90,000। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर लेट्स चेक कि मैच हो रहा है कि नहीं। लेट मी जस्ट रिड्यूस द डेसिमल्स टू टू डिजिट्स। अब आपके डेज कैसे गिनोगे? अगर आपको एवरेज यूज करना है तो 365 डिवाइडेड बाय 3.54। अगर आपको एंडिंग इन्वेंटरी यूज करना है 365 डिवाइडेड बाय 3.45। सो लेट्स सी फर्स्ट मैथमेटिक्स, फिर हम रेशियो को इंटरप्रेट करते हैं। आई होप वी हैव नॉट डन एनी मैथमेटिक्स रॉन्ग। ठीक है, so 3.54 times it's matching and 105.85 days it's matching। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? कंपनी ने रॉ मटेरियल लाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, गुड्स रहे इन्वेंट्री में, उसके बाद इन्वेंट्री सेल हुई। तो ऐसा साल में कितनी बार हुआ? 3.54 टाइम्स। दैट इज व्हाट इन्वेंट्री टर्नओवर रिप्रेजेंट्स। डेज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि वेयरहाउस में जब फिनिश गुड्स थे वहां से सेल्स हुआ उसमें कितना दिन लगा। तो एक बार वेयरहाउस में गुड्स आते थे, फिर उनको सेल्स होने में ऑन एन एवरेज 106 दिन लग रहे थे। सो व्हाट इज द एक्शन फॉर द कंपनी? या तो आप टर्नओवर बढ़ाओ, साल में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको कम करो, या एवरेज इन्वेंट्री को आप बढ़ाओ। बिकॉज यू हैव अ मोर इन्वेंट्री यू कैन डू अ मोर सेल्स। या आप फटाफट गुड्स को बेच कर आओ। आपका एंडिंग इन्वेंटरी जो 106 दिन तक रहता है उसको आप ट्राई करो, यू कैन सेल इट इन 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज। So you want days to go down or you want turnover ratio to go up? This is interpretation, आपको पूछेंगे नहीं, but just for your knowledge purpose. So this is how, Interpretation same नहीं है in both we are looking for to sell the inventory fast. yes, that is the, and I 100% agree, दोनों का वही इंटरप्रिटेशन है और इसीलिए दोनों रेशियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So if you do a better inventory turnover, your days will automatically improve, or you do a faster sales, your inventory turnover will improve. So this both goes hand in hand. Okay. चलो, नाउ आई विल गिव अ टास्क, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो आप खुद सॉल्व करो। ब्रिंग योर ओन फॉर्मूला एंड देन ट्राई वेदर यू आर एबल टू मैच अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट्स पेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है पीएनएल में, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बैलेंस शीट है तो आप एवरेज यूज करोगे। डेज कैलकुलेट करने के लिए यू विल यूज Cost of sales क्यों है? कॉस्ट। आप अकाउंट्स पेबल को क्यों इनकर करते हो? बिकॉज यू आर परचेजिंग समथिंग। अगेन हम लोग ये ग्रॉस मार्जिन के रेशियोज देख रहे हैं। एआर के लिए सेल्स, इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, अकाउंट्स पेबल के लिए अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कि आपने जो परचेज किया है वो परचेज कितना फास्ट कंज्यूम होकर इन्वेंट्री बन रहा है और कितना फास्ट होकर इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सो टू दो टास्क आपके लिए। सबसे पहले टर्नओवर रेशियो गिनो, उसके बाद डेज गिनो। डेज अगेन आप दोनों तरीके से गिनोगे, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू एज वेल। Hmm, 50.2. 50.2 इज नॉट मैचिंग। आप एक बार चेक करो व्हाट रॉन्ग हैज गॉन। 50.2 with days payable. ओके, सो Uh, विद यू आर average. टॉकिंग अबाउट एवरेज इन्वेंट्री। Hmm. ठीक है, और एक बार एंडिंग से भी चेक कर लो, इज योर नंबर मैचिंग तो 55 डेज।
I'll first divide 150,000 divide by 1 million, then divide by 365, or first I have to divide Ignore million by this 360. formula. Ignore this formula. आप सिंपल कैलकुलेट करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सॉरी अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। एक बार एवरेज अकाउंट्स पेबल लो, जो हमारी मेथड है, एक बार एंडिंग अकाउंट्स पेबल लो। Whatever answer comes, 365 divided by this particular answer will give you the days. So as I said, आप एक ही अप्रोच रखो which will help you in the exam not to remember too many formulas. It's 365 divided by the turnover. Yes, exactly. 365 divided by the turnover. I'm doing something wrong. चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। यहाँ पर ट्विक करते हैं। वी आर लुकिंग नाउ अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। दो मेथड्स है। फर्स्ट ऑप्शन यू से कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय योर एवरेज अकाउंट्स पेबल। एक दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय योर एंडिंग अकाउंट्स पेबल। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या दी है आपको क्वेश्चन में। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपके पास 1 मिलियन, यूज दोनों जगह 1 मिलियन। एंड अकाउंट्स पेबल एवरेज क्या होगा, 150 प्लस 125, दिस इज आई थिंक 275, इसका आधा होगा 137,500। एंड अगर आप सिर्फ एंडिंग अकाउंट्स पेबल लेते हो सो दैट इज 1,50,000। सो अगर आप एवरेज अकाउंट्स पेबल लेते हो, डेज आर 7.27, सॉरी योर रेशियो इज 7.27। डेज कैसे गिनोगे, 365 डिवाइडेड बाय 7.27, सो इट्स कम्स टू 50 डेज। अगर आप एंडिंग यूज करते हो अकाउंट्स पेबल, सो योर रेशियो इज 6.67 एंड नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, 365 डिवाइडेड बाय 6.67 व्हिच इज 54 डेज। बैकर ने टर्नओवर के लिए ये फॉर्मूला यूज किया है और डेज के लिए ये फॉर्मूला यूज किया है। So let's just see whether these two answers are matching with our working or not. So you have accounts payable turnover ratio 7.27 using the average accounts payable matching 7.27 average accounts payable. Days के लिए उन्होंने ending accounts payable यूज किया है, that means second option 2 यूज किया है, so days are 54.75, so it's 54.75. क्लियर है, जी, पक्का। जी। चलिए लास्ट रेशियो पे आता है, देन वी विल होल्ड फॉर अ ब्रेक। और एक एग्जांपल है मेरे पास सेपरेटली, हम सिर्फ इतने रेशियोज पहले सॉल्व करेंगे एंड टुमारो विल कम बैक, वी विल चेक अबाउट द सॉल्वेंसी रेशियोज एंड अदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड देन रेशियो वी विल कंक्लूड, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन भी ना हो एंड यू कैन ऑल्सो यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज वेल। लास्ट ये हमने अगेन डिस्कस किया था डेमो सेशन में। यू हैव समथिंग कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इट्स योर डेज इन इन्वेंट्री प्लस डेज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, कि आपने कितने टाइम में कैश जनरेट किया, दैट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल आप यूज क्यों करते हो, टू चेक व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो तो सपोज आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 200 डेज, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, 200 डेज और 1 ईयर विच एवर इज मोर, सो 1 ईयर की आइटम को आप शॉर्ट टर्म गिनोगे। सपोज आपका ऑपरेटिंग साइकिल बनता है 2000 डेज, सो 2000 डेज और 365 विच एवर इज हायर 2000 डेज, तो सारी आइटम अप टू 2000 डेज विल बी कंसिडर्ड अ शॉर्ट टर्म आइटम्स। आपको याद आ रहा है, ये हमने किया था एक डेमो सेशन में। और पहले साइकिल का फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग साइकिल इज डेज इन अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस डेज इन इन्वेंट्री, सॉरी डेज इन इन्वेंट्री, सो फर्स्ट टू आइटम्स, दिस इज योर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, नाउ ये भी हमने फॉर्मूला देखा था, दिस इज कॉल्ड अ कैश कन्वर्जन साइकिल और
नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ये हम बताते हैं कि हमारे पास नेट पैसा कितने दिन में आ रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट। डेज इन इन्वेंट्री क्या होता है? वी ऑर्डर्ड अ रॉ मटेरियल, इट गॉन इनटू अ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री इज प्रिपेयर्ड, इन्वेंट्री इज इन वेयरहाउस एंड इन्वेंट्री इज सोल्ड। सो जब तक इन्वेंट्री बिकती है उसको बोलते हैं डेज इन इन्वेंट्री। वंस इन्वेंट्री कन्वर्ट्स इनटू द सेल्स अकाउंट्स रिसीवेबल, आपने कितना फास्ट पैसा कलेक्ट किया उसको बोलते हैं डेज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। तो फर्स्ट टू आइटम का मतलब क्या है? योर रॉ मटेरियल स्टार्टेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन इन्वेंट्री इज प्रिपेयर्ड, इन्वेंट्री इज इन वेयरहाउस, इन्वेंट्री इज मूव्ड एज अ सेल्स एंड मनी इज कलेक्टेड। सो जब आपका प्रोडक्शन शुरू हुआ और आपके कस्टमर ने आपको पैसा पे किया, दैट इज योर डेज इन एयर प्लस डेज इन इन्वेंट्री। ये आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। बट व्हाट इज द कैश कन्वर्जन साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल? सामने आपको आपके अकाउंट्स पेबल को भी तो पैसा देना है जिससे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो नेट टू नेट आपके पास पैसा कितने दिन में बन रहा है? तो आपने जब इन्वेंट्री बनाया और इन्वेंट्री बेचा उसमें 106 दिन लग गए। 106 दिन बेचने के बाद और 60 डेज लग गए टू कलेक्ट द मनी। सो योर मनी वॉज ऑन होल्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 165 डेज, आपको पैसा नहीं मिला। लेकिन सामने आपको सप्लायर ने भी 55 डेज का क्रेडिट दिया, तो आपने नेट टू नेट 111 दिन में अपने पैसे बनाए। दिस इज कॉल्ड अ कैश कन्वर्जन साइकिल और अ नेट ऑपरेटिंग साइकिल। सो दिस इज अ क्लासिक वे ऑफ आस्किंग द सिमुलेशन। वो आपको पूछेंगे कैलकुलेट अ कैश कन्वर्जन साइकिल, सो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट डेज ऑफ एआर, then days of inventory, and then days of accounts payable, and use this formula, and then your cash conversion cycle can be prepared. Clear है? Days of sales and accounts receivable is the previous formula. Okay. Sorry, days in sales and, No, I got it. चलिए ठीक है। So let's take a 5 minutes break. We'll come back. In this particular sheet only I have a example for you. हम लोग सारे ratios नहीं करेंगे right now. We will just focus on all the ratio we have done so far. So we will start all with our profitability ratio. उसके बाद हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो, एंड दैट इज इट। इतना ही हम सॉल्व करेंगे ये पर्टिकुलर एग्जांपल में, देन वी विल कॉल इट अ डे। विल कम बैक टुमारो, विल लुक एट द बैलेंस शीट डेट साइड रेशियो एंड परफॉर्मेंस रेशियो, एंड अगेन सेम एग्जांपल में हम वो चीज भी सॉल्व करेंगे। चलिए, आई विल सी यू नाउ इन 5 to 10 minutes.
शुरू कर दे once you are back. So over to you. Go on one by one all the ratios you have. Year one, year two, year three. Informations are given. There is a balance sheet and there. Okay, so there is no income statement in this. So okay, ठीक है. So you can start preparing with all the current ratios जो हमने देखे थे. So you start with all the you have a current ratio to calculate. Then you have liquid ratio to calculate. What else? What other ratios we have seen today? So let's see balance sheet को क्या क्या impact कर रहा है. Accounts receivable turnover ratio. Then you have an I don't inventory. I don't remember the formulas. Should I say? बनाओगे ना, don't worry. Accounts receivable practice करोगे तभी तो आपको confidence मिलेगा. And then you have a cash conversion cycle. पहले आप सेल्फ ट्राई करो फॉर्मूला बनाने का. इफ नॉट देन मैं हेल्प करता हूँ एंड देन हम बुक से देखते हैं. सो ओवर टू यू. सबसे पहले करंट रेशियो. व्हाट इज द करंट रेशियो? Current assets or current liabilities? परफेक्ट. लिखिए फॉर्मूला पहले करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी एंड ईयर 3 का आप कैलकुलेट कीजिए. और मे बी यू कैन डू फॉर ऑल द ईयर्स. आपको सिर्फ फॉर्मूला ही रेप्लिकेट करना है. सो व्हाट इज योर करंट एसेट्स? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 टोटल करंट एसेट्स. परफेक्ट. व्हाट इज योर करंट लायबिलिटीज? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? सबसे पहले रेशियो कैसा है एंड एज अ ट्रेंड what is your interpretation of this? So our assets are more than our liabilities, and the ratio has been getting better for the Right, your past current year. assets are getting better. If you see, the liabilities are almost the same. It's 135, 137, 139. So company is not able to manage their liabilities. They are not able to reduce it, but they are able to manage their current assets, which is increasing, which ultimately gives you a better current ratio. Interpretation क्या है? For every your $1 of your liability, you have a $2.11 of your current assets available for your obligation. Every $1 of your liability, you have a $2.47 of obligation, and this is keep improving, which is a good sign for the company. चलिए, second ratio, liquid And ratio. 2.47 of obligation. What did you say? Every $1 of current liability, company has a $2.47 of cash or a current assets available. Every $1 of liability in year 3, company has $2.81 of current assets available. So if you have a more assets against your debt, it's a good sign. Okay. चलिए लिक्विड रेशियो पे आ जाइए. सेकंड नाम है इसका क्विक रेशियो. Total current assets minus inventory. माइनस प्रीपेड एज वेल. अगर आप सेकंड अप्रोच से जाते हो तो आपको इन्वेंटरी तो माइनस करनी है, बट आपको प्रीपेड भी आपको माइनस करना है. व्हाई? बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोस कि जो आप कंज्यूम करोगे ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स. सो ये आपके पास कैश नहीं रहा है. इट्स अ एक्सपेंस यू हैव ऑलरेडी डन. दिस इज अ अकाउंटिंग एसेट फॉर यू जो आपकी कंज्यूम होगी इनकम स्टेटमेंट में. सो ये लिक्विड एसेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि आज आपकी पॉकेट में कितना पैसा है. प्रीपेड एक्सपेंस तो खर्चा हो चुका है, आपने एडवांस में पैसा दे दिया है. इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक. एक्सपेंसेस विल बी अमोर्टाइज्ड. तो आप या तो ऑप्शन 1 से जाओ वेर यू सी अ कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस एआर प्लस अदर करंट एसेट्स.
या दूसरा फॉर्मूला ले रहे हो तो इट्स अ टोटल करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. It will be divided by current liability. Perfect. It will be divided by current liabilities. ईयर वन में आपने कैसे निकाला? योर प्रीपेड इज 80 और इन्वेंटरी इज 10, सो 90 यू हैव टू रिड्यूस फ्रॉम 285. आपने क्या फॉर्मूला लगाया 270 में? मैं गलत माइनस कर दिया. करेक्ट फॉर्मूला पहले टाइप करो, उसके बाद आप फिगर्स डालो, सो दैट विल गिव यू द क्लैरिटी. We have better liquidity in year 3. ठीक है मेरा सॉरी, क्या बोल रहे हो? We have better liquidity in year 3. Yes, so what we are seeing now. Okay, let me first check. 80 plus 90 निकाला 195. Perfect. So हम लोग क्या बोल रहे हैं that for every 1,35,000 of your current liability, you have a liquid assets available of 195, which is 1.44. That means every $1 of your current liability in year one, company had $1.44 of cash available. Every $1 of liability in year two, company had $1.72 of cash available, and which got better in year three. Higher the better. So situation has improved in year three. Company has a better liquid assets in year three compared to first 2 years. चलिए अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. अच्छा आपको लेकिन यहाँ पर सेल्स नहीं दिया है, सो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू सम आर्टिफिशियल नंबर्स, अदरवाइज आप है ना कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. लेट मी जस्ट पुट अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट. So let me just say you have a sales and this is your cost of sales. You have a gross profit and let's say you have an operating expenses, which gives you operating profit less interest expense less taxes gives you the net income. Let's quickly put all this thing. 1,000, 2,000, 3,000. Let's put 18% as a cost of sales. Let's put 20% as a cost of sales, and let's put 22% as a cost of sales. So sales plus COGS gives you gross. So this is your gross margin. And let's just say 100,000, let's just say 250,000 operating expense, 295,000, let's just say 335,000. This gives you operating profit.
Just 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0. Let's say interest 300k, 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 and let's say taxes of 425k, 445k, let's say 475k. So your net income comes to operating profit plus interest plus your taxes gives you the net income. I think first year में loss बन रहा है. That's it. So just add the income. ठीक है, over to you. I have just plotted some draft, very high level numbers. So just go and calculate all the three turnover ratios. So over to you. AR turnover, inventory turnover followed by AP turnover. And we are going to use average calculations only, not the ending calculations. It's a average accounts receivable divided by sales. Nahi. Whenever you have a turnover ratio, so all the balance sheet item goes to the denominator. So average AR in denominator, average inventory denominator, average accounts payable denominator. न्यूमरेटर में इनकम स्टेटमेंट का आइटम. सो एआर के लिए रिलेवेंट क्या है? सेल्स. सो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एआर. इन्वेंट्री और एपी के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल. Payable will be cost of sales. सॉरी. For payable, it's also cost of sales. यस, पेएबल्स क्यों जनरेट होते हैं आपके? एक है आपकी लायबिलिटीज के लिए होते हैं, विच आर योर वेजेस पेएबल एंड ऑल दोस थिंग्स. बट राइट नाउ हम लोग जो रेशियो कर रहे हैं, दिस आर योर ग्रॉस प्रॉफिट रिलेटेड रेशियो. तो आप जो रॉ मटेरियल परचेस करते हो इन योर कैश कन्वर्जन साइकिल, उसके लिए आप क्रेडिट पे माल उठाते हो, तो आपका जो अकाउंट्स पेएबल जनरेट होता है बिकॉज ऑफ योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम वो रेशियो की बात कर रहे हैं. सो व्हेन वी से टर्नओवर रेशियो, मतलब आपने साल में ये चीज कितनी बार की है. व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट लायबिलिटी, ये है आपकी अक्रूड लायबिलिटीज जो मंथ ऑन मंथ चलती रहती है, जिसका टर्नओवर रेशियो से कोई भी रिलेशन नहीं है. सो वी आर ओनली फोकसिंग जो सेल्स जनरेट करता है वो टर्नओवर रेशियोस. For year one, we have no starting, so the average would be just 120,000. Yes, that's a good point. ऐसा आ सकता है. So just put 120,000 of that 1 year. It's a first year of your business, so you don't have the data available. You will use only a 1 year data.
So then, even for this 130, 45, 140 plus 160, that's 150. So 12, 15, 20 times. एक बार days भी निकाल लो साथ के साथ right side पे. What are the days? Okay, चलो पहले AR पे बात करते हैं. What are your interpretations? It's taking us less days to receive money in Perfect. year So it's three. improving. It's improving. Perfect. The first year mein, your AR was outstanding for almost 29 days. Second year mein, you improved 23 days. And now you are able to collect your AR faster, 18 days only. Second way to see कि पहले आप सेल्स साल में सिर्फ 12 बार करते थे. And you increased 15 times and now you are doing 20 times. So both are positive. So it's a good ratio. It's an improved ratio for the company. चलिए इन्वेंट्री टर्नओवर पे आपका कैलकुलेशंस निकाल लीजिए फिर इंटरप्रेट करते हैं. Uh, So your formula is cost of sales divided by average accounts payable. So first year average accounts payable are, oh sorry, average inventory, sorry, my bad. Average inventory is 80, second year 80 plus 90, that's 170, so 85, 90, 100, so it's 85, oh sorry, 95, 190, okay. Now what we are saying, it's negative signs पहले हटा लो, negative signs ratios में नहीं होते हैं. So you have 3.38, 4.70 and 6.94. And your average days are coming 108, 77 and 52. Okay, what are your interpretations? it's taking us 6 days to move inventory. Before it was lesser days. नहीं समझा फिर से बोलो. It's taking 7 days for us to remove our inventory. Before it was 3 days. नहीं, this So is the times you have done and this is your days. So 7 times in a year, your inventory came, inventory sold. Inventory came, inventory sold. First year 3 times it happened. Inventory came, inventory sold. Second year 5 times, inventory came, inventory sold. Third year 7 times, inventory came, inventory sold. First year time was 108 days. So when inventory came and inventory sold, inventory was in for 108 days. Second year 5 times inventory came and inventory sold. But kitna time warehouse mein inventory raha? 78 days. For the third one, 7 times you have done inventory came, inventory sold. Lekin in between 53 days inventory raha. So what is your interpretation now? Is company doing good or company doing bad? good. Yes, good. Why? Two aspect. Number one, company is able to do more sales now. First year में only 3 times. Second year में they did 5 times. Third year में they did 7 times. Also आपके days भी कम हो रहा है. First year में you had an inventory backlog of 108 days. Second year में now in 78 days you are able to sell. And now in third year you are able to sell in 53 days only. चलिए एक बार accounts payable calculate कर लीजिए.
तो पहले आप इंटरप्रिटेशन बताइए एंड देन एनालिसिस बताइए. Uh, it's taking us more days to pay. More days or lesser days? Lesser days to pay. Is it a good or is it a bad? Good. Okay. Now, if you are a company, what you want your customers to pay faster, but you also want your debts to be paid little bit slowly. You don't want default, but you want a Yes. better credit period, so you get more money for working capital in your hand. So what is Yeah. your generally a target कि आप AR कर रहे हो, get the money faster from the customer. Inventory आ रही है warehouse में, get it out quickly to get it sold out. But जब आप accounts payable देखते हो, you want to now slowly paying to your accounts payable. You don't want to default. But if you are paying normally on 60 days, you try to negotiate, you get a 90 days payment terms now. So always you want to slow down your payables and you want to quicken up your receivables. यहाँ पर उल्टा हो रहा है. So what happened in year one? Company took 81 days to pay their accounts payable. It reduced to 57 days, and now company is paying in 37 days. It's a risk. Why it's a risk? आप अपने कस्टमर के साथ जो पैसा कलेक्ट कर रहे हो प्लस आपका जो इन्वेंट्री है दैट इज इन 71 डेज टर्म. 53 डेज तो आपको लगता है इन्वेंट्री को आके इन्वेंट्री को बिकने में, वो 53 डेज के बाद आपको 19 दिन लगते हैं पैसा कलेक्ट करने में. सो आपके पास ही पैसा बन रहा है 71 डेज के बाद एंड यू आर पेइंग योर लायबिलिटी इन 37 डेज. दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर करंट रेशियो. आपका करंट रेशियो खराब हो जाएगा इससे, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ असेट्स अवेलेबल विथ यू, बट यू हैव अ लायबिलिटी ड्यू राइट नाउ विद इन दी 37 डेज. लेकिन आपका करंट असेट कब जनरेट होने वाला है? 71st डे को. So you want to slow down your payables to make sure you have enough time to get the money from your inventory and your customers and then prepare a strategy to pay out your debts. Clear? Mm. अगर MCQ पूछता है कि what should be the company strategy for AR? Get faster. Inventory, get faster. Accounts payable, get it slower. Okay. चलिए कैश कन्वर्जन साइकिल निकाल लीजिए एक बार. Mm. So, what's the formula? So what is the cash conversion? Just I said कि आपने इन्वेंट्री मंगाया, इन्वेंट्री बिका, उसके बाद कस्टमर ने पैसा दिया, माइनस Yeah. आपने अकाउंट्स पेबल को कितना टाइम लिया. सो इट्स अ AR days in accounts receivable plus days in inventory minus days in accounts payable. तो आपने यहाँ तीनों दिन गिने हुए हैं. सो डेज इन AR 29. I'm डेज, not being able to edit. Or never mind. क्या बोल रहे हो? सॉरी, नहीं कुछ नहीं. आई एम जस्ट पुटिंग दिस नंबर्स इनटू द पॉजिटिव्स. ठीक है, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो व्हाट वी आर सेइंग कि हमारा कैश कन्वर्जन कैसे है. 29 डेज AR से पैसा लेने में लगा. वी हैड 108 दिन पैसा इन्वेंट्री बिकने में लगा. 81 डेज में हमने पे किया अपनी लायबिलिटी को. सो नेट हमने 56 डेज में पैसा बनाया. इन सेकंड केस नेट हमने 44 डेज में पैसा बनाया एंड नेट यहाँ पर हमने 33 डेज में पैसा बनाया. सो ओवरऑल कंपनी इज डूइंग गुड. कंपनीज कैश कन्वर्जन इज बिकमिंग फास्टर. आप जल्दी पैसा बना रहे हो, but there is an opportunity to delay your accounts payable here and still further make your cash conversion cycle more better. Sure. ठीक है, all clear यहाँ तक? Yes. Okay, in your homework now you have to complete this gross ratios. It's very simple. कोई भी doubt हो तो आप पूछ लेना. I'm just putting here. So one, you have to calculate gross margin for all the 3 years and just have a net margin. Third one is operating profit. The fourth one is return on sales.
or rather than return on assets, let's put it like this way: return on asset, and the one is return on equity. And what else we did? Gross profit, net profit, operating, return on asset, return on equity. Operating इसको अभी छोड़ देते हैं. Let's do last one, this 0 point return on sales. So this is your homework. Just go through all the formulas. बहुत simple है. You have income statement available here for year 1, year 2 and year 3. आपका आंसर बहुत ही easily निकल जाएगा. Still if you find any difficulties, हम यहाँ से शुरू करेंगे कल. And once this is done, आपकी homework, then we are going to move towards the solvency ratios. That is mostly your debt and equity ratio plus performance ratio. EPS हमने already अलग से किया हुआ है, तो हम उसको further build करेंगे. How market price affects your EPS and what is your dividend payout ratio. So ratio हमारा complete हो जाएगा. Then we have a small topic to cover tomorrow, which is a flexible budgets. Interesting one, मजा आएगा. And then you will be done with this particular chapter. Wednesday onwards, we will start with our reverend chapter. Okay, so I'll see you tomorrow. कुछ भी questions हो पूछ के आना, and finish your exam if you get time today or early tomorrow. Okay. Thank you. Bye bye.